Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. Today we will start exercise 1.4, but before we will start exercise 1.4, I'm going to embark some important points before starting this exercise. Operations on real numbers. What are operations? No. You are not right. We are not studying biology here. We are studying maths here. And in mathematics, our operations are basically none other than एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हम हमेशा मैथमेटिक्स में बस ये चार चीजें ही ऑपरेट करते हैं. किसके साथ? रियल नंबर्स के साथ. कैसे? लेट्स फाइंड आउट. आवर फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन. एज यू नो, हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं हमेशा हमें यही देखना चाहिए कि वेदर द नंबर्स आर लाइक और अनलाइक. जो भी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे टर्म, जो भी एक जैसे टर्म्स दिखने में है हम हमेशा उन्हें ही ऐड करते हैं, उन्हें ही सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो एग्जाम्पल गिवन, √3 + 2 + 5 + 2√3. यहाँ पे लाइक टर्म्स हमारे ये दोनों हैं और ये वाले दोनों लाइक टर्म्स हैं. तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 2 + 5 is 7. √3 + 2√3 is 3√3. उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में जैसे कि एडिशन में है, लाइक टर्म्स को हमें एक साथ देखना है, अनलाइक टर्म्स को एक साथ देखना है. जो एक एक जैसे हैं उन सबको ऐड कर दो, उन सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो एक जैसे नहीं है हम उसे वैसे ही लिख देते हैं. जैसे एग्जाम्पल गिवन, 8 + 3√2 - 6 - 2√2. इन दोनों में लाइक टर्म्स हमारे 8, 6 हैं और 3√2 एंड 2√2 है. ये वाले दो है रैशनल, ये वाले दो है इरैशनल. तो 8 - 6 is 2, 3√2 - 2√2 is √2 कॉमन ले लेते हैं एंड 3 - 2 कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 - √2. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन होता है हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे वो लाइक हो चाहे वो अनलाइक हो. उसको हम किसी रैशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हो या इरैशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस समय फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे कि हमारे पास 2 × 3√2 है प्लस 5 है. तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3√2 से, फिर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें. 2 × 3√2 is 3 2s are 6 and √2 plus 5 × 2 is 10. Your next is division. डिवीजन में भी वही है. अगर हमारी दोनों चीजें लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. अगर जैसे हमारा है 2√7 डिवाइडेड बाय 6√3, तो हमारा टर्म हो जाएगा 1/√3 √7/√3. या फिर अगर हमें दिया हुआ है 2√7 डिवाइडेड बाय √7, तो हम √7 से √7 को कट कर लेंगे एंड इट विल बिकम 2. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of this chapter is rationalization or rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator क्या होता है? For example, if we are taking a term 1/√7, 1/√7 हमने एक टर्म ले ली और हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. इट मीन्स हमें जो डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर है उससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसका आंसर आ जाएगा √7 डिवाइडेड बाय 7. So this is the rationalization. Some important points which we have to study before starting exercise 1.4. The sum or difference of a rational and irrational numbers is rational. अगर हमें दो नंबर दिए हुए हो, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर,
और अगर हम उन दोनों को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा वो पूरा नंबर एक इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस रूट 3 प्लस 3 प्लस रूट 3, ये दोनों रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिले हुए हैं तो दोनों रैशनल रैशनल मिलेंगे, इर्रेशनल इर्रेशनल मिलेंगे, लेकिन ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? ये पूरा नंबर एक इर्रेशनल कहलाएगा. Number 2, the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. Similarly, जैसे कि sum or difference of a rational and irrational number is irrational, उसी तरीके से कि अगर हम कोई rational और irrational number को multiply या divide कर रहे हैं, collectively the whole number is considered as irrational number. Our third point is if we add, subtract, multiply or divide टू irrational number जिसमें कोई rational number नहीं हो, the result may be rational or irrational. अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड और वो दो नंबर्स irrational नंबर हो तो रिजल्ट मे बी रैशनल हो सकता है, मे बी irrational हो सकता है. 2√3 multiplied by √3 is equals to 2 multiplied by 3 which is 6 and which is rational. Yes, so did you get my points? Let's start exercise 1.4. Let's start. Question number first is classify the following numbers as rational and irrational. First part is 2 minus root 5. What we have studied in our important point that when we subtract rational and irrational numbers, the answer is irrational. Or you can say when we subtract rational minus irrational numbers, the number is your irrational. Let's start B. Within brackets 3 plus root 23 minus root 23. Let's solve it first. 3 plus root 23 minus root 23. They both are same. They are cut. Your answer is 3. And 3 is rational. Let's take a look on C. 2 root 7 divided by 7 root 7. You can cut root 7 upon root 7. It will become 2 upon 7, which is rational. Come to point D. 1 upon root 2. Rational and irrational in the question and your answer is irrational. हमने अभी important points में देखा था कि अगर हम दो rational और irrational नंबर को multiply या divide करेंगे, whole जो हमारा number होगा, it will be considered as irrational number. Last but not the least, 2 pi. We already know that pi is an irrational number and it will be multiplied with any of the rational number. It will be your irrational. Now come to question number 2. Question number 2 is simplify each of the following expression. अभी तक हमने सिर्फ rational, irrational, rational, irrational, whether the product is rational, whether the sum is rational, whether the sum is irrational, whether the difference is irrational, or you can say quotient is irrational. अभी तक हम सिर्फ यहाँ पर थे. अब important part start होता है which is simplification. Simplification is to solve the expression. How can we solve this expression? Our first question is 3 plus root 3, 2 plus root 2 by using distributive property. What is distributive property?
फर्स्ट नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये वाला साइन लगाओ, सेकेंड वालों को दोनों से मल्टीप्लाई करो. कैसे? लेट्स फाइंड आउट. 3 multiply 2 plus root 2. What is the sign? Plus here. Root 3 multiply 2 plus root 2. कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? 3 2s are 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 3 into root 2. 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus, जब भी रूट होते हैं हम अंदर से उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. root 3 into root 2 is root 6. This is your answer. Come to B part. 3 plus root 3, 3 minus root 3. 3 minus root 3 plus root 3, 3 minus root 3. 3 3s are 9 minus 3 root 3 plus 3 root 3. 3 3s are root 3 into root 3. Can you see? There is 3 root 3 minus 3 root 3. So you can cut these numbers. 9 minus root 3 into root 3. They both are same. Root bahar, root cancel. 9 minus 3 and your answer is 6. After getting 6, आपने क्या देखा? अगर हम दो irrational numbers को multiply करेंगे, हमारा आंसर एक rational number भी आ सकता है. Let's come to the part 3. Our C part is root 5 plus root 2 whole square. जब भी whole square होता है हम उस पूरी क्वांटिटी को 2 times लिख देते हैं like this. And next we are going to use distributive property. root 5 ऐसे ही रहेगा. root 5 plus 2 plus root 2 root 5 plus root 2. root 5 into root 5, 5 plus root 5 into root 2 is root 10 plus root 2 into root 5 is root 10 and root 2 into root 2 is 2. Like numbers add 5 plus 2, 7. Root 10 plus root 10 is 2 root 10 and this is your answer. In the last part we have root 5 minus root 2 and root 5 plus root 2. Root 5 plus root 2 minus root 2 root 5 plus root 2. Root 5 into root 5 is 5 plus root 5 into root 2 is root 10 minus root 2 into root 5 is root 10 and minus root 2 into root 2 is 2. Cut. 5 minus 2 is 3. Moving on to question number 3. Let's see question number 3. Recall. Pi is defined as the ratio of the circumference C of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? What does the question say? Question said that there is a circle which has a circumference c and has a diameter say d, and we have a pi is equals to c upon d. अब उन्होंने पाई की वैल्यू बोल दी है कि पाई की वैल्यू है circumference divided by diameter. This seems to contradict the fact that pi is irrational.
अब कोई भी अगर फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो उसके फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई इरेशनल है जबकि पाई रैशनल है. So how can we resolve this contradiction? See, you already know that 22 upon 7 is an approximately value of pi. 22 upon 7 is an approximately value of pi, and the decimal expansion of 22 upon 7 is non-repeating and non-terminating. And whenever the decimal expansion is non-repeating and non-terminating, the number is said to be an irrational number. So how can you write this answer? You can write this answer as 22 upon 7 is an approximately value of pi. The decimal expansion of 22 upon 7 is non-terminating, non-repeating, hence pi is an irrational number. Moving on to question number 4. Let's start question number 4. Represent root 9.3 on a number line. It will take 5 steps to complete this question. Let's start with step 1. Draw a line AB which is equals to 9.3 units. Draw a line AB which is equals to 9.3 units. What is step 2? From B, measure a distance of 1 unit and mark C on the number line. Next step is B से आगे हमें 1 सेंटीमीटर और लेना है एंड हमें उसे क्या मार्क करना है? C मार्क करना है. Mark midpoint of AC as O. AC का midpoint हमें O मार्क करना है. Third step is with O as a center and OC as a radius, draw a semicircle. अब हमें क्या करना है? We have to draw a semicircle using a compass. Compass लेंगे इतने radius का and we have like this. Draw a semicircle. At B, draw a perpendicular to cut the semicircle at D. हमें क्या बनाना है? हमें B पे बनाना है एक perpendicular which is straight line like this and mark it as D. With B as a center and BD as a radius, draw an arc to cut the number line at E. Let us extend this number line like this. Now, what is step 5th? With B as a center, हमें B center लेना है and BD as a radius. Radius क्या लेना है? हमें BD and cut it as E.
Thus, B as an origin, BE is equals to root 9.3. BE is a root 9.3. So this is the solution of question number 4. Moving on to question number 5. Our last question of exercise 1.4 is rationalize the denominators of the following. Let's start with A part, 1 upon root 7. How can we rationalize 1 upon root 7 is 1 upon root 7, multiply it with root 7 and divided it with root 7. 1 into root 7 is root 7 and root 7 into root 7 is 7. Your answer is root 7 upon 7. Come to B part, 1 upon root 7 minus root 6. जब भी हमारे डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस साइन आता है और अब हम उसे रेशनलाइज करना होता है, तो जो भी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, जो भी दो नंबर्स के बीच का साइन होगा हमेशा उसका ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. दिस इज द ओनली रूल फॉर रेशनलाइजेशन. मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? रूट 7 प्लस रूट 6. And how can we divide? We divided it with same number, root 7 into root 6. 1 into root 7 into root 6 is root 7 plus root 6. Divided it with the root 7 minus root 6. Root 7 plus root 6. By using identity is a plus b, a minus b is equals to a square minus b square. A plus b into a minus b. Our identity is a square minus b square. Root 7 plus root 6 divided by root a minus b, a plus b, a square. A square is root 7 whole square minus root 6 whole square. Root 7 plus root 6. Root 7 whole square is 7. Root 6 whole square is 6. 7 minus 6 is 1. Root 7 plus root 6 divided it by 1. Come to C part. 1 upon root 5 plus root 2. One into root 5 minus root 2 is root 5 minus root 2 divided it by root 5 plus root 2. Root 5 minus root 2. Same identity, a plus b, a minus b, which is a square minus b square. Our numerator will remain same, and in denominator a square, which is root 5 whole square minus root 2 whole square, which is equals to root 5 minus root 2 divided by root 5 whole square is 5, root 2 whole square is 2. Your answer is root 5 minus root 2 divided it by 3. Come to the D part, 1 upon root 7 minus 2. Root 7 minus 2. If you want to rationalize the denominator, change the sign. Root 7 plus 2, root 7 plus 2. Root 7 plus 2 multiplied by 1 will remain same, and in the denominator a minus b, a plus b is a square minus b square. Numerator is same, root 7 plus 2 divided by root 7 whole square is 7 minus 2 into 2 is 4. Your answer is root 7 plus 2 divided by 7 minus 4 is 3.
This is your answer, and with this answer we are going to conclude our exercise 1.4. See you in the next video.